हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर चैनल फैब बेगना। तो आज एक रिव्यू है, छोटा सा रिव्यू मैं करने वाली हूँ एंड दैट इज अबाउट शुगर्स न्यू लॉन्च एंड दिस इज द शुगर्स कंसीलर। द नेम ऑफ द कंसीलर इज मैजिक वॉन्ड वाटरप्रूफ कंसीलर। तो ये कंसीलर लॉन्च हुआ है, काफ़ी दिन हो गया है, नो आई थिंक इट्स मोर देन अ मंथ but I have purchased this recently and I've been using this more than a week, and now it's time to review this product. I have swatched all the shades so you can see them and I will tell you about each and every shade definitely. तो सबसे पहले इसकी आउटर बॉक्स एंड पैकेजिंग एंड प्राइस इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो ये आपको इस तरह से कार्डबोर्ड बॉक्स में मिलती है। शुगर का यू नो दैट फेस, दैट लेडी फेस, वो आपको मिलेगी। एंड यहाँ पे आपको शुगर की जो इस कंसीलर की शेड है वो भी आपको नंबर यहाँ पे मिलेगी। दिस इज द नंबर, लाइक आई हैव चोजन नंबर 15। दिस इज द थर्ड शेड। 6 शेड्स में ये अवेलेबल है, सो दिस इज द थर्ड शेड विच आई हैव चोजन and my shade name is cappuccino. I think I have pronounced it correctly, cappuccino. If I'm wrong, then please get me right, okay? And this is made in Korea. 8.4 ml की प्रोडक्ट मिलती है, 799 इसकी MRP है। And this is paraben free, cruelty free, and this is vegan. And it has like anise seed oil, anise oil, like जिसके कारण क्या होगा, आपका ये जो कंसीलर है स्किन के ऊपर like it will look very flawless. Now this is waterproof and this is long lasting. This will last around for 8 hours. That is what the company claims. मैंने इसको लगाया था 6 hours तक एंड आई फाउंड दैट दिस इज रियली लॉन्ग लास्टिंग। ये जरा भी नहीं हटा अपने प्लेस से, कोई क्रीजिंग नहीं हुआ। आई जस्ट यूज शुगर्स न्यूली लॉन्च बनाना पाउडर टू सेट इट एंड इन द डेमो ऑल्सो, हियर ऑल्सो ये ड्रेस पहन के ही मैंने दिखाया है आपके सामने कि किस तरह से मैंने इसको अप्लाई किया है। आई हैव ओनली यूज फेसेस कैनेडा की टिंटेड मॉइस्चराइजर विच हैज़ एब्सोल्युटली नो कवरेज एंड उसके ऊपर ही मैंने इस कंसीलर को लगाया है। एंड नाउ यू कैन सी माई मेकअप, हाउ फ्लॉलेस दिस मेकअप इज लुकिंग। एंड टू ब्लेंड दिस वन आई जस्ट यूज अ ब्रश एंड माई फिंगर्स, क्योंकि ब्यूटी ब्लेंडर से ब्लेंड हो ही जाएगी। लाइक अ नॉर्मल, अ वेरी सस्ता वाला यू नो अ ब्रश मैंने यूज किया है एंड इट वॉज लाइक अ मैजिक। इट्स ट्रूली अ मैजिक। मैंने मुंह में ना कंसीलर लगाने के लिए फाउंडेशन या कुछ भी नहीं लगाया है, मैंने सिर्फ फेस को वॉश किया है, आई मेकअप कंप्लीट किया है, लिपस्टिक लगाया है। लिपस्टिक भी शुगर ब्रांड की ही है एंड yes, I want to do this in front of you guys. I will be applying Faces Canada's Peaches and Cream Tinted Moisturizer. मैं इसलिए ये मॉइस्चराइजर अप्लाई कर रही हूँ बिकॉज क्या होता है कि अगर आप फाउंडेशन लगाने के बाद इसका रिव्यू करोगे ना तो दैट विल नॉट बी द प्रॉपर वे ऑफ रिव्यूइंग दिस, बिकॉज फाउंडेशन हैज़ इट्स ओन कवरेज एंड आई रियली वॉन्ट टू मेक श्योर दैट this has been reviewed properly. इसका कवरेज सही तरह से मैं आप लोगों को बता सकूं and that is the reason I am using this tinted moisturizer which has almost like zero coverage. okay, तो आप लोग देख ही सकते हो कि मैं ये tinted moisturizer ही अप्लाई कर रही हूँ, कोई फाउंडेशन नहीं। You don't even need a brush or a beauty blender to blend this out. और मेरी जो सबसे बुरी चीज़ है यहाँ पे वो है देयर इज अ ब्लू वेन, यू नो, अंडर आई डार्क सर्कल से भी ज़्यादा वो ज़्यादा मतलब बुरा लगता है मुझे। नॉर्मली जहाँ जहाँ पे मैं कंसीलर को अप्लाई करती हूँ मैं वहाँ पे अप्लाई करूँगी। See, so many spots I have on my skin, guys. इन आप लोगों के हेल्प के लिए I felt that I need to go to the store and I need to, see myself that what are the shades so that I can tell you the pros and the cons. मैं यहाँ पे एक फ्लैट ब्रश यूज़ कर रही हूँ, फाउंडेशन ब्रश, एंड जस्ट सी हाउ इट इज ईजी टू ब्लेंड।
Can you see how easily it's blending into my skin? That is the beauty of this product, I think. And कितना कम प्रोडक्ट मैंने लिया है. यहाँ पे ना मैं फिंगर्स से अप्लाई कर रही हूँ, मतलब ब्लेंड कर रही हूँ, जस्ट टू शो यू गाइज. इवन इफ यू डोंट हैव एनी ब्यूटी ब्लेंडर और अ ब्रश, just don't worry, no need to go out and buy. You can just use a fingertip and just blend this one. So can you see how this whole thing just got easily blended? I mean, you can easily blend this product out easily. So I will be setting this with sugar banana powder, jo ki this is also a new release, and I will be reviewing this product very soon, so stay tuned. क्योंकि ये लॉन्ग लास्टिंग है. दिस इज गुड फॉर ऑल स्किन टाइप्स. आई थिंक ड्राई स्किन के लिए भी ये सही है बिकॉज इट्स नॉट ओवर ड्राइंग, but this will give you a matte finish once you set this with the powder, and this looks flawless. Now shades के बारे में मैं बात करूंगी. पहला जो 3 shades है, these will cater to actually to light to I think fair skin tone people के लिए, क्योंकि मैंने 3rd shade choose किया है, and the 3rd and the 4th shade will go with medium skin tone people, and the last 2 shades will go with dusky beauties like dark skin tone people. तो इस तरह से शेड्स अवेलेबल है. नंबर 1 जो शेड आप देखोगे तो वो शेड क्या होता है, वो थोड़ा सा पिंक अंडरटोन है, ज्यादा पिंक अंडरटोन है. एंड इफ यू हैव अ लाइक वेरी पिंकिश अंडरटोन स्किन टोन, और मे बी अ पोर्सलिन काइंड ऑफ स्किन टोन, वेरी फेयर, और इफ यू हैव like a fair complexion and want to use a concealer to conceal and to highlight, तो shade number 1 या shade number 2 आप select कर सकते हो. Shade number 2 I found this to be little bit yellowish, तो मेरे स्किन के लिए वो परफेक्ट नहीं था बिकॉज आई फाउंड दैट लिटिल बिट ज्यादा येलोइश लगा मुझे, बट इट्स वेरी ब्राइटनिंग. एंड 3rd शेड जो मैंने सिलेक्ट किया है, नाउ दिस हैज अ लिटिल बिट ऑफ पिंक अंडरटोन कंपेयर टू द शेड नंबर 2, बट दिस मैचेस माई स्किन टोन परफेक्टली. तो अगर आपका स्किन टोन मेरे जैसा ही है तो यू कैन गो फॉर दिस नंबर 3 शेड नंबर like
like 15, और अगर आप मुझसे थोड़ा सा फेयर ज़्यादा हो and or if you want to use the concealer to highlight, then go for shade number 1 या shade number 2. इसकी thickness consistency perfect है. It's perfect to hide your dark circles, to hide your blemishes. and इस तरह से ये प्लास्टिक की बॉटल में आती है. आपको शेड का नाम एंड शेड का नंबर बॉटल में भी मिलेगी. सो आउटर बॉक्स रखना जरूरी नहीं है. एंड देन व्हेन यू ओपन दिस अप यू गेट अ इस टाइप की आपको एक एप्लीकेटर मिलेगी. इट्स काइंड ऑफ अ डो फूड एप्लीकेटर एंड दिस इज परफेक्ट क्योंकि आपको लगाने में सुविधा होती है. दिस डज नॉट हैव एनी any weird smell. हल्का सा कोई स्मेल लगता है, मुझे हल्का सा स्मेल लगता है, but it's not that a weird smell. इनफैक्ट लगाने से आपके नाक तक कोई स्मेल पहुंचेगी नहीं. and this is not irritating. This does not settle. This looks flawless. पाउडर से आप सेट करोगे, this becomes perfectly matte. What else can we ask from a concealer? So Sugar, you have really given us a very good product. Thanks to Sugar Cosmetics. And this is not a sponsored video, guys. मैंने खुद जाके पैसा देके ये लिया है. So that's it. That's the main thing about this product. I think I have said everything about this product. Always keep that smile on your face, and we are going to meet again in our next video. But if you haven't subscribed my channel, dear, then please do subscribe my channel. Bell button की hit करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा. And subscription is absolutely free. So yes, take care and bye.